Okay. So, today is another UX session that we are going to have. It's a short session on understanding what user persona is. So, we'll be going into the theoretical part of what the persona is and how personas are done. This exercise is done and why it is so important to do this exercise. And after that, I'll be giving you, we'll be doing the entire exercise starting from taking the template, filling out the template, what all things you have to take care when you fill out all the important points in the template. So that way, all of your doubts would be solved and you'll be able to do exercise on your own, right? Now, before getting into what exactly user persona is, can any one of you tell me what do you understand by the word persona? Normal, normal English, like whatever you comes to your mind when you hear the word persona. Yes, Diva, it's better if you keep your cameras on. I'm logged in my system. Yeah. I'm logged in my system. There is no webcam, so I'm using just my phone to talk Oh, today. okay, okay. Okay, you can join by your phone then, so that you can use the camera. Yeah. Okay, yeah. So, can any one of you tell me what do you understand by persona? Okay, so persona is like it's a personality that we are going to talk about. Okay, it's like you can say that this is a short form. All the characteristic of a person, a male person and a female person, will be discussing about them. We'll be talking about their background information, like what are they doing right now in their life, how their family is, how their behavior is, overall how's their personality, right? We'll be having a discussion on the persona, on the user's personality, and then we will be dealing into more to the point stuff that would be about what are the problems the user is facing. We'll be talking about the pain points of users, we'll be talking about the goals of users, and we'll be also listing out wants and needs, and more importantly, we'll be also talking about the expectations of user, right? So all these points are catered towards the user persona, and it will be mostly towards what the problem statement is of yours, and the problems that the user is facing, right? So this is the exercise which is done after user research. Okay, so user research ke baad we have to do user persona exercise. So the important part about this exercise is it's not going to be a real character. Instead, it's going to be a fictional character. Why? There's a reason behind it. Okay, so let's say you have done user research, you have done all the you have done the survey part, you have taken all the surveys and all, and you have you know you have gotten around 50 people responses, right? There are 50 people who filled up your form, and you have got that responses. Now you got all the analytics and all. You start to analyze the data you have, right? So there are 50 people data, you start analyzing that. And in persona you have to like you have to have that data and create a one single personality out of all those 50 people. So those 50 people's problems, those 50 people's wants and needs, those 50 people's goals, you have to combine them in a one single persona. So that's why it is fair to say that this persona won't be a real character, it is going to be a fictional character, right? But all the logic behind it, all the important parts, like the data we have, it's all going to be real, it's all going to be based on your research, right? So this is the fictional character that we'll be creating. And next thing is, yeah,
Next thing is, um, this is like a exercise. Personas are about to creating products with a specific non-generic user in mind. The usefulness of persona in defining and designing digital product has come widely accepted in the last few years. So this is a important part, like most commonly followed exercise in terms of UX design, and this is catered to both the genders. Okay, so when you create persona, you have to create two personas. It is always recommended to create two personas. Now, why it is that, and for that, I would like to give you an example. So, let's say we have a problem statement of a meditation application. We are going to create a meditation app, right? So, that what are your target audiences when you create a meditation app? I think 35 प्लस ऑडियंस जिनका एज इतना हो 35 अराउंड या 40 तक, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ऑफिस का वर्कलोड, फैमिली का प्रेशर, ये वो, तो उनको एक मेडिटेशन का एक नीड रहता है कि हाँ 1 घंटे टाइम निकाल के मेडिटेशन वगैरह करे, ताकि थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो और Right. बॉडी के लिए भी Right. ठीक हो। Yes. So 35-year-old who are in corporate and all, they do have work stress or family stress and all that stuff. But nowadays, even kids are taking therapy and all, right? So, we can also talk about the stress a 18-year-old might be having. And it is not going to be the same scenario what a 35-year-old is going to have. A 18-year-old or let's say 20-year-old is stressed because we do hear suicides mostly happening in this generation, in this age group, right? So they are dealing with some kind of stress, but the situation is different. There might be relationship issues, parents issues, freedom issues, and money issues maybe. And then another level of stuff like career and all, studies and all. So people do suicide because of that. So target audience, we can say that 18-year-old to 55-plus-year-old can be using our meditation application, correct? So why to create two personas? Because you have to take in mind of this kind of age group people, 20 years old person, and you'll be creating a persona of 40-year-old person, and you'll be talking about their personality, their struggles. um like as I said, 40-year-old, a corporate job, two kids, let's say married person, having a different kind of anxiety and depression and all the stress, and a 20-year-old has a different story. So that's why, again, this also differs when you talk about gender, right? So a female being in a young age might have different kind of stress, and a female who is maybe recently married and is stressed about her, let's say, let's take a hypothetical situation like her in-laws are not good and she is having a um, childbirth pressure and all that stuff, so maybe a different kind of stress to her. So you have to take any of this, like you can take 20-year-old male or a female, and then 45-year-old male or female. So then you have to talk about their personalities and what kind of issues do they have, because we will be creating solution to both of the genders and both of the age groups. So that's why we'll go with two personas creating a fictional character of theirs. Now, when we create persona, we talk about the user's behavior, goals, skills, attitude, background information. That means biography also we have to give it and put it in a template, right? What things do you have to, consider when you're creating this persona? So a persona is going to define like a main character. You'll be talking about his or her attitude, all the motivations in his life, right? Now let's say you talk about, for example, we are going to take a problem statement of similar to websites like Cars 24 or what we have, spinny wheels, we have Cars Dekho. What are these platforms? These are mostly like you can buy a second-hand car on their platform, and you can also sell your car over there, right? So those are the platform to buy and sell a second-hand car.
So when you talk about this persona, when you talk about this character, of course you're going to give a biography. Now let's take a persona who is a 40-year-old. Let's say we will take a 35-year-old who is a male and who is married, who has kids and all, right? And so you'll give a little bit of background information. Where does he do? What job does he do? He's into IT field. He has 7 to 8 years of experience. He has around 15 lakhs package and all. So you can talk about that. And he has a wife and 2 children. Lives with a family. His parents are there with him. He lives in a city, Pune city or Mumbai city. And um, then when you are done with the biography, you start talking about more about his character. What kind of character he is, like personality. Is he a jolly person, or he is very much, into himself, into his world person? Then is he extrovert, introvert, like normal stuff about people's personality. Is he independent or dependent, right? Is he high maintenance or low maintenance? All that stuff, random stuff we'll be talking about over here, just to define how the character is, right? And then we'll be focusing on why exactly these people are coming on your website. That is going to be, let's say, Cars 24. So we are building a Cars 24 website, which is he can buy a second-hand car from us on our platform. So why is he motivated to be over there? So you talk about his motivation, right? We already have this data. So when we were doing user research, we understood the parameters of user research, right? And motivation was one of the parameters. Needs was there, motivation was there, and I think expectations was there, right? So you already know what people's motivation are. So you combine all the people's motivation and put in his personality and tell that, he is married, he is traveling 15 kilometers every day to his job, and he is a very trek enthusiast person. He love going like doing outing with the family or friends on weekends, and he even has a kid and all. So that's why he's motivated to buy a second hand car, and he has a tight budget on that. He has saved 3 or 4 lakhs to buy a second hand car. So that is where the motivation is coming. He wants to go with on the trip. He wants to travel to the work on a daily basis because he is tired of using like what we say, um, government commute thing and all, and spending money, like wasting money on auto rickshaws and cabs and all, right? Or else go traveling on a scooty when even if it is a rainy season. So this is where the motivation is coming. Now you understand the motivation, you understand the goal. Goal might be he want to buy a second hand car, a good second hand car in his budget. That can be his goal, right? So you talk about this information, like why exactly he is motivated in his biography, right? So biography, like giving background information check about him. So try to write down all the stuff which is related to the problem statement, why exactly is motivated. And then like putting down the goal in persona is again very important. So we define the persona's wants and needs. The goal is the motivation of why the persona is taking the action. What goal is reached, the scenario ends. When the goal is reached, the scenario ends. So again, we'll be evaluating all this point, but keep in mind what exactly is the goal of user, and you can just put it in the. Uh, so I'll tell you how to put the goals and all that stuff in persona. So when we talk about all these things, most importantly in persona, when anyone look out at the persona, they will always look out for the pain points. It is also called as frustrations. Okay. So what are the user's frustration regarding the problem statement? So it is not going to be about the frustrations in his life. It is going to be about the frustrations that you have understood in the competitor analysis. So why are people pissed about a certain interface? Why are people not, why do people don't want to go on cars deco or spinny wheels? What are the things they are not getting over there? What are the things that is, demotivating them on purchasing a
car from their website. So you talk about pain points. All right. And this is a very crucial part in doing persona. All right. So when we talk about all this stuff, we create a scenario. Scenario is a scene which describes all these events. You talk about character, attitude, motivation, goals, all these points. That creates a entire scenario of a persona. So this is all about the theoretical part of understanding what persona is. We'll be now doing a full exercise on cars24.com itself. Till here, if you have any problems, you can ask your doubts. No doubts. Okay. So let's come to this point and yes. So we'll be taking a template to do this exercise. Again, you will go over here. This is a Figma file and we'll search for persona. And you get this one. There's only one template for persona, which is very neat and clean template, right? This is the template. All right. So now there are two sections in this template. We are not going to take a look at this. You can delete this. So there are two sections. One section is all about the information of the persona. So we are going to fill out this. And second thing over here is all about the main important points like interest, goals, needs and wants, motivations, and pain points. So in this section, we'll be talking details about all these points. So one by one, let's start about the let's fill out all the information. Now, first things first, you have to give a name to your persona. Now, again, name you have to, as this persona is a fictional character, again, so giving a name should always be kind of a, you can give a fictional name, let's say, like made up name you can give. Let's say I give, not Priya, I give Akshay Sharma. Someone name Akshay Sharma. Now, over here, you're going to put a real photo, like take any of your friend's photo and put it over here. And you do not go with any kind of model's photo or celebrity's photo, because otherwise, this whole analysis would be like, uh, that would be the bad part, right? So, even if it's a fictional character, everything is, all the story is real behind it, right? And next thing is, you will never give a foreign name. Like you won't give name like John something something, right? Because your target audiences are Indian, your application, your product is like going to be used by Indians, so you give Indian name, right? Now, over here, you have to give a little bit of demographics. What is the age of this person? Let's say he is 35 years old. What is his occupation? He is IT engineer. Location, maybe he lives in Mumbai or will take Pune city. You can put down more information like married status and all. Then over here, this is the biography part where you have to tell that Akshay is an IT engineer. He is married and has two kids, right? You can give more information like he lives with a family and whatever stuff comes to your mind. But so you do all this part in first paragraph and you do another paragraph over here. So in this paragraph, you talk about the way I said, like you have to tell why Akshay would be motivated to come on Cars 24. तो वो motivation लिखो. Maybe you can, so I'm not going to write, I'm just verbally going to tell you. So you can write कि Akshay is traveling to his office from his scooty, and he do not have any car. He has wife and kids. He has a family. He's also enthusiastic about weekend trips with family and friends.
So that's why he is very much motivated to buy a second-hand car. So all these problems of his would be solved if if he'll buy the car, right? So that is why the motivation is coming. So in the biography, even if you ignore the initial background check on Akshay, that is also fine. But you have to put down why people are interested to come on your application, right? Or on your website. So you tell that about Akshay. Now, over here, you can talk about his personality. So, what, how the Akshay is extrovert, is analytical. Maybe you can talk that he is analytical. Why is he analytical? Because um he has a certain package and he has not purchased the car in this years because of being analytical with the finances and all. And finally, he could do that much of saving where he can buy a very good car, but still like a second-hand car, but a very good car, right? Then is he busy or time rich? Maybe he is busy because he has a job that is promising. How is he? Messy or organized? So this won't be like completely related to the product you're making. Randomly, you can put this out. You can talk about the personality you know really well. Is he independent? Yes, he is independent. He's passive or active? He is active. He's safe or risky? He's safe. सो दिस वे यू क्रिएट अ पर्सनालिटी. तो ये अपने को टेम्पलेट में मिल जाता है, तो आपको बस यहाँ पे चेंजेस बनाने हैं. मोर ओवर आप इसको एडिट भी कर सकते हो. आपको लगता है कि और कुछ इसमें ऐड करना है तो वो आप ऐड कीजिए, ठीक है. ऑलराइट, देन कम टू द इम्पोर्टेंट पार्ट. यहाँ पे ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा उन्होंने दिया है. विल बी टॉकिंग अबाउट motivation, wants, needs. ठीक है, you can keep these points. Needs and expectations, goals, motivation, and pain points and frustrations. All right. Now, I want you guys to be like interactive for this because I'm not going to put all the information on my own. So you guys should tell me all the points. What do you think? Needs and wants कर देते हैं यहाँ पे. Wants and needs कर देते हैं. Pain points है, goals है, and moreover, motivation and expectations. Okay. So one by one, we'll write it down, all the points. So first thing that so it's a needs and wants section, right? So he wants a car which would fit in his budget. So affordability is the first thing that he need, right? Then if he is buying a product, then he don't want to have a product which is used at least for like 10 years or 15 years. Like the car is very much outdated model. He don't want that. So yes, he needs a fresh product, right? So I'm writing in one words. You have to define it, right? पूरा sentence में लिखो आप जब भी लिखोगे. He Okay. want a good maintained car. Maintenance is something he want, right? Okay. And good mileage also. Yes. And family car. Okay. He wants a family car. He want a good
पेपर वर्क डन, राइट? पेपर वर्क वगैरह, मतलब इंश्योरेंस एंड ऑल, जब भी हैंड ओवर वगैरह होगा, सो ही wants a good thing to be that, हम्म। right? वो जो भी मॉडल एक्सपेक्ट कर रहा है वो मॉडल होना चाहिए. लेट्स से ही wants a Honda City, right? So that expected model should be there on the site. एक्सपेक्टेड मॉडल। Then moreover, um एंड टेस्ट ड्राइव फीचर होना चाहिए. ये भी होना चाहिए, आई थिंक सीएनजी और पेट्रोल ऑप्शन। Yes, so it's the fuel type. फ्यूल उसका जो टाइप। भी fuel type रहेगा वो होना चाहिए. We want transparency from the dealers. So even if it's a car owner or it's a application or a website, whoever is selling the car, he wants to have a transparency कि भाई अगर कार को डेंट है तो बताओ कि डेंट है, कार का सर्विसिंग नहीं किया है, कार किधर से भी खराब है, तो वो ट्रांसपेरेंसी इज एक्सपेक्टिंग. यू कैन टॉक लाइक दैट. एक्सपेक्टेशन में भी अपन डाल सकते हैं इसको. कैन पुट दिस इन एक्सपेक्टेशन. ओके. ही वांट अ कार, जो भी उसको कार पसंद आए, तो ही दैट कार शुड बी अवेलेबल इन हिज लोकेशन. सो ही इज फ्रॉम पुणे, राइट? पुणे में ही अच्छी कार उसको मिले, ऑप्शंस ज्यादा मिले, एंड वो डिलीवर हो प्रॉपरली, राइट? सो दैट इज व्हाट ही वांट्स. What else? Yes, Divya, I would like to hear it from you. इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए, आई थिंक मैनुअल या ऑटोमेटिक भी दे सकते। Yes. So we can write down all the car specifications. So जो भी उसको हाँ। specifications चाहिए, मैनुअल चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, जो भी है, तो उसको होगा, right? Okay. So I think this much is enough for this part. Now let's talk about the goals. What are his goals? वो Yes. His goals would be, maybe he wants to have a good time management from the application, from the website. कि अगर, even if he's booking a test drive, even if it's a car handover part and all, so everyone has a time sensitivity. Everyone is time sensitive. तो वो उसका वो उसका गोल है कि भाई इसमें कुछ इशू नहीं होना चाहिए. Maybe his goal is about the payment security. If something is there on the application itself, then there should be security regarding the payment. That is his goal. His goal can be, again, he want a good condition car. एंड पेमेंट सिक्योरिटी में भी जैसे ईएमआई ऑप्शंस। Yes, his goal is that he can find a EMI option on the website. Yes, good point. What else? Yes, Divya, please be interactive. And try to be on camera. So next time, try to open the meeting from your phone also, so that you can turn on your camera. Okay. Okay. His एंड goal, इजी ट्रांसफर। हाँ, एक सेकेंड. तो ये भी एक है कि उसको, उसका एक गोल है कि, अगेन, जैसे अपन ने वांट्स एंड नीड्स में लिखा है कि ही वांट्स ट्रांसपेरेंसी, तो गोल में भी ये पॉइंट आ सकता है कि कार की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए, राइट? सो दैट इज व्हाट हिज गोल इज. अपन ने ये एक्सपेक्टेशन में लिखा है, तो गोल में डिटेल इंफॉर्मेशन
and a good handover of car, right? मतलब ease से होना चाहिए, good or like ease, we will write down ease. By ease the handover should be done of a car and all. उसमें कुछ problems नहीं आनी चाहिए, that is goal. Then अगर कुछ और goal is can be having a exchange policy. You know, this sites, I think it's Car24 only. They have a policy where they give car to you for at least 75 days. You can try out that car. If you don't like it, you can return it. So this is something that they are doing. So yeah, that can be a goal expected from our product also. Exchange policy या फिर try out days ऐसा कुछ तो भी, so we can try out days. This can be a goal. Yes, you were saying something. मतलब ये भी होना चाहिए कि उसका जो इंस्पेक्शन है 100% वही Yes, रहना चाहिए कि इंस्पेक्शन जो रिटर्न में है तो वैसे ही होना चाहिए इस टाइप से कुछ। absolutely right. So goals can be on this also कि जब भी आप कार देखने जा रहे हो, टेस्ट ड्राइव के लिए वगैरह जा रहे हो, so there should be someone from the team who can come along, check the car, check the condition of the car, check the engine, क्योंकि अपने को उतनी समझ नहीं रहती है. So you Correct. can have someone from the team who can check all these things for you and verify all the documents for you. And then after that, of course, if you get a green flag on that, you can take the car. Great, absolutely right. What else is coming to your mind? एंड एक्शन हो गया। और आई थिंक लेने के बाद कुछ सर्विसेज फ्री भी मिल सकता है उनकी तरफ से, मतलब हमारी Yes, तरफ से अगर हम yes, कार 1 साल के लिए सर्विस फ्री free, हाँ. So we can write down freebies. वो कुछ freebies दे सकते हैं अपने को. फ्री भी दे सकते हैं। 3 सर्विसेज इन अ सर्टन किलोमीटर, 10 हाँ 10 के किलोमीटर चलाओगे तो आपको एक सर्विसिंग मिलेगी कंपनी की तरफ से या जो भी है. आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे क्लीनिंग वगैरह के लिए, मेंटेनेंस के लिए. सो या, सो गोल्स इज लाइक अ प्लेटफॉर्म कैन हैव फ्रीबीज, राइट? ओके. इसमें वो भी हो सकता है ऐसे हाँ, जो भी पेपर वर्क्स है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, हाँ, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड या जो भी चीज़ है यस, वो डिजिटली भी मतलब हम दे सकते हैं, जैसे डिजी कार्ड वगैरह जो ओके. एक से डिजिटल So, डिजिटल डिजिटल डॉक्यूमेंट वर्क है। डिजिटल ट्रांसफर, और वी कैन से दैट, राइट? ओके. Now let's write down motivation and expectations. Okay, transparency is something which is expected. What is expected? mileage. We have written that in wants and needs. We expectations can be like, अगर कोई गाड़ी ले लेता है, then it is expected to have a fast delivery. So that can be an expectations, right? Fast delivery of a car. फास्ट Maybe डिलीवरी एंड reshipping is expected, right? या बुक फॉर टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं, या फिर हाँ, और मतलब कुछ अमाउंट देके भी हम कार को बुक कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ओके. जैसे मेक माई ट्रिप में भी होता है ना हम लोग, हाँ, हाँ, हाँ. Upfront amount या तो कार on होल्ड पे हो जाता है उस तरीके से। हाँ, so that is expected. Mostly ये UI expectations है, इंटरफेस से expectations है कि upfront booking वगैरह इसमें हो.
A very good point it is. फिर हम लोग कभी कभी डिस्काउंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने को कुछ ऑफ मिले, कुछ फेस्टिव ऑफ वगैरह हो, तो वो भी एक्सपेक्टेशंस में आ जाता है. Right? What else? And we have also written motivation. So आप motivation भी डाल सकते हो यहाँ पे. So let me just make one more thing. अगर ये expectations है, so let's write down motivation. You guys tell me what should I write in motivation. Person should be like service. Hmm? Yes? Whoever selling the car, the person हाँ. giving services and those nice to the user. No, we did not understand what you said. Customer services like that for car services. Best Customer. best customer services. If we get that, Okay. Can you yeah. put it in chat box? That would be better thing. आपकी आवाज ना क्रैक होती है. Okay, so moreover in expectations, motivations, अभी गोल में और भी चीजें आ सकती है. एक्सपेक्टेशन में कार की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए. दैट इज अ गुड expectation that you can do. Condition of a car, right? Or let's say age of a car. We have an expectation that we would get a car which is 3 to 4 years used, like that. We have an expectations that car has, let's say, car has no history of accidents. एक्सीडेंट. So that is an expectation, right? या एंड टायर कंडीशन में हम लोग एक बार देख सकते हो Yes. कि कितना टायर का कितना बचा हुआ है उसमें, बराबर. कितना देंगे. और अगर सेकेंड हैंड कार ले रहे हैं तो उसमें कुछ म्यूजिक सिस्टम स्टीरियो कुछ ऐसा Yes. भी है या नहीं है. बराबर. So I think we can put that all thing in condition of car, like what अच्छा होना चाहिए. टायर हो या इंजन हो, everything can come in that. एंड And we also have an expectations. Let's say कि किसी की expectation हो कितनी है कि मुझे होंडा सिटी चाहिए और वो भी ब्लैक कलर में. So color can be an expectation from a user, right? कलर हो गया. प्राइस रेंज भी सेट कर सकते हैं, हाँ. इतने से इतने तक चाहिए. Price range और slash. 7 सीटर चाहिए या 5 सीटर, ये हाँ. भी हो सकते हैं. Right. Yes. Yes. Now can we fill this motivation part? Or yes or no? Okay, let's just only write down the expectation part over here. All right. Then we have pain points. Chalo, abhi this has to be from your part. Tell me pain points. Okay, one thing is pain point can be all about
स्कैमर्स ऑन एप्स, लाइक बहुत बार ऐसा होता है, कोई कुछ बेचना चाहता है और बोल देता है कि आप अभी कुछ पैसे ट्रांसफर करो एंड विल डिलीवर द कार, लोकेशन पे आ जाओ, ये लोकेशन है, आपको मिल जाएगा गाड़ी। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ऑल दोज आर स्कैमर। तो ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है, राइट? सो ओके। दिस कैन बी समथिंग दैट वी लाइक एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ, स्कैमर्स ना हो। ये थोड़ा डिफिकल्ट है सोचने के लिए पेन पॉइंट्स क्या हो सकता है, बट स्टिल गिव इट अ थॉट, टेक योर टाइम। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई कार बहुत पसंद आती है, आपके बजट में भी होती है, कंपैरेटिवली लो बजट होता है वगैरह, बट एक फ्रस्ट्रेशन वहां पे आ जाता है कि उसके नंबर ऑफ ओनर्स ज्यादा हो जाते हैं, राइट? करेक्ट। मतलब नॉट अ सेकंड हैंड पर्सन दैट कैन बी यूज्ड बाय अ थर्ड ओनर, राइट? अब थर्ड पार्टी। यस, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, सो दैट कैन बी अ फ्रस्ट्रेशन पॉइंट। व्हाट एल्स? Moreover, frustration can be for the service part also. कभी भी किसी भी चीज की अगर अपने को बैड सर्विस मिलती है तो हम्म। बड़ा पेन पॉइंट हो जाता है। एंड अच्छा। वही पेन पॉइंट और एक चीज को लेके होता है, अगर आपका पेमेंट कहीं पे स्टक हो जाए, आपके पैसे स्टक हो जाए, आपको रिफंड ना मिले, या फिर कुछ भी हम्म। बुरा हो जाए पैसों हम्म। के साथ, तो वो एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मे बी वी कैन राइट डाउन लाइक mode of payment, not like mode of payment, but just the point, money transfer और पेमेंट इशू। कुछ कुछ लोग अगेन बोलते हैं कि हमको आप चेक ही दे दो, या फिर कैश ही दे दो, या फिर ऑनलाइन ही ट्रांसफर करो, वी डोंट वांट दिस, वी डोंट वांट दैट। सो दैट कैन बी अ बिग फ्रस्ट्रेशन। यस, व्हाट एल्स? यस दिव्या, इज एनीथिंग कमिंग? All right, so maybe one last point we can write down is about, I'm not sure, but it can be about comfort of car. Oh, yeah, that can be a frustration. If some हम्म। car is there and which do not have an EMI option to that, that can be a frustration. Like if someone is asking upfront payment of, let's say 50-50 even, that can be a या frustration. You want to have an EMI option for that. या So, फिर वैसे भी अगर यार ट्रस्टेड बैंक उनके हाँ, साथ हैं तो वो कर सकते हैं, कि कोई थर्ड पार्टी वैसा कुछ नहीं है। trust issues आ सकता है regarding anything. रिगार्डिंग एनीथिंग। Okay. All right. So when you create a persona, यूजुअली आप ऑनलाइन बिहान्स पे देखोगे ना पर्सोना, अलग अलग टेम्पलेट्स होती है, और लोग ज्यादा करके तो गोल्स एंड पेन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं कि वो होना चाहिए। बट ओके। आप जब भी करोगे, यू टॉक अबाउट वांट्स एंड नीड्स आल्सो, क्योंकि वो इवैल्यूएट करना भी इम्पोर्टेंट है। और एक्सपेक्टेशंस भी डालो, अगर आपको लगता है कि वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी डालो, ठीक है? ओके। और अब एक्सपेक्टेशंस में ना एक और चीज आ जाती है, दैट इज मोस्टली लाइक, एक
कंपनी को एक प्रोडक्ट को लेके एक्सपेक्टेशन होती है और दूसरी एक्सपेक्टेशन होती है यूआई को लेके, राइट? तो उसमें आ जाता है कि इंटरफेस जो हो वो यूजर फ्रेंडली हो, राइट? करेक्ट। और लोडिंग टाइम वेबसाइट का ज्यादा ना हो। कभी कभी अगर बहुत हेवी वेबसाइट हो जाती है तो लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो दैट कैन आल्सो कम इन फ्रस्ट्रेशन पॉइंट, ओके? ओके। वेबसाइट लोडिंग, राइट? देन आप यूजर्स के एक्सपेक्टेशंस ये भी होते हैं कि अगर गाड़ी का फोटो कोई डाल रहा है तो वो एक क्लियर क्लियर इमेज के साथ डाले, तो वो आ जाता है यूआई एक्सपेक्टेशंस में भी कि यू नीड क्लियर क्वालिटी ऑफ फोटो, राइट? देन अगर आपको और यूआई में घुसना है तो आप रीडिंग पे डालो, मतलब फॉन्ट साइजेस वगैरह जो है वो इजीली रीडेबल वगैरह हो, तो अ, वो भी होता है, ये सब मतलब चीजें। कार का इसमें पूरा एक 3D व्यू होना चाहिए फिर। हाँ, लाइक 360 डिग्री व्यू ऑफ अ कार थ्री भी सिक्सटी अपलोडेड। डिग्री। यस, वो सब भी आप डाल सकते हो। सो वंस यू डन विद दिस, आपका पर्सोना रेडी हो जाता है, राइट? एंड एज आई सेड, ये तो हो गया, लेट्स से दिस इज 35-year-old अक्षय। नाउ यू कैन टॉक अबाउट लेट्स से 40-year-old फीमेल, और लेट्स से 24-year-old फीमेल। उसका क्या है, उसके प्रॉब्लम्स अलग होंगे, एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल में भी थोड़ा सेम रहेगा, बट बैकग्राउंड चेक, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वगैरह थोड़ा रहेगा डिफरेंट। एनी डाउट स्टिल हियर? यस दिव्या। No. ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस कि आपका असाइनमेंट्स कहाँ तक आया है? आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दिव्या, because you told me कि you'll be sharing a link with me, right? Of your statements and all. I still haven't received it. Is there anything bothering you? Why aren't you working? I want to know the reason. When I have sent the things, I have done is that file. You have sent a Send the files, right? Okay. That one. you have sent a file to me. No, that one only link. Yeah, link of that file. Yeah. You have sent a link to me. It's in last class you are checking that files now. Yeah. No, that was about the UI part, na? That was like your doubt. I'm asking about the UX part. कि you have to start with a case study, right? तो उसके लिए चालू तो करना पड़ेगा कहीं से तो भी, राइट? उसका I'm asking. What about you, Rahul? What is happening? You're busy with the work or what? मेरा पूछना। हाँ हाँ हाँ, आपको ही। या मैंने एक 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 अभी ना, एक पीपीटी मैंने वैसे रेडी करा हुआ है, जिसको मैं फिग जैम में बस मेरे को उसमें ऐड करना है। ठीक है। ठीक है। और मतलब मैं उसको बनाता 30+ मैच मेकर्स के नाम से, जो कि सिमिलर रहेगी ये क्या बोलते हैं उसको, मैच शादी.com समथिंग लाइक। शादी.com, ओके। या वो 35, सॉरी 30+ मैच मेकर इसलिए क्योंकि उसका जो मोटिवेशन रहेगा, जो गोल रहेगा, वो रहेगा कि जिनके ज्यादातर डाइवोर्स हो जाते हैं ना सेकंड मैरिज के लिए, तो उनका एज ऑटोमेटिकली 30+ हो जाता है। हो जाता अगर है, यस। अगर डाइवोर्स हो जाता है तो उनका 30+ एज हो जाता है, तो बेसिकली उनके लिए एक ऐप है जो उनसे थोड़ा सा हटके होगा, और उस पे सिर्फ वही लोग रजिस्टर कर सकते हैं जिनको सेकंड मैरिज करना है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो मैंने उसका थोड़ा सा वो बना रखे हैं, नोट्स वगैरह रेडी करा हुआ है, और ओके, मैं उसी पे ही वर्क करना चाहता हूँ। ओके, चलेगा। हाँ। Just create a statement and send it to me.
So हाँ मैं आपको we शेयर have कर दूँ। started the work anyways, yeah. चलेगा, ठीक है. And yes, Divya, so this is what I'm talking कि UX कहाँ पे है? कुछ thought, do you have any thought process going on? Well, yeah, Yeah. I didn't start it as of now, but I'll try. Okay. I'm just taking inspiration from Behance. I'm just, Okay. yeah, I'm just going through that too. After that, Okay. चलेगा. So give me a deadline till what time you will be submitting the problem statements. Give me a date. I'll try to send next session. Next session, that would be Friday. Yeah. Okay. So I'll be expecting problem statements from both of you till Friday. Okay. ओके Because we have done user research, competitor analysis, user persona. Now today we have done 3 exercises. Now we are moving fast that way. So it is very much important for you guys to cope up. ठीक है. तो इसलिए एटलीस्ट चालू करो तो बाकी सब फिर पटापट हो जाता है. ओके. ऑलराइट. विजिबल है क्या? यस, इट इज विजिबल. एक ही मैंने स्टार्ट करा था थोड़ा सा बनाना ये। ओके. Yeah. आपने वो असाइनमेंट्स किया क्या जो मैंने बोले? आपने जो रिकॉर्डिंग देखा वो? आई थिंक यू weren't there in that session. जो लास्ट टाइम आपने लास्ट क्लास में जो बताया था इसका दो दो वो देना था क्या? हाँ. हाँ हम्म. हाँ मैंने उसका भी बनाया है। ओके. उसका मैंने मैंने कुछ वो दो दो पॉइंट्स नोट करा हुआ है लेकिन वो इस वाली आईडी पे नहीं है वो। ठीक है, आप मुझे लिंक भी भेज सकते हो. कैलकुलेटर हाँ डिजाइन था और स्पॉटिफाई का होम पेज का डिजाइन बोला था रेप्लिकेट करने के लिए स्क्रीन. ठीक है, यहाँ पे क्या किया है आपने? ये इसमें एक डेस्कटॉप व्यू. हाँ ये डेस्कटॉप वेबसाइट बना रहा था ये थोड़ा नीचे लो उसको. हाँ. ओके. इसको डेस्कटॉप वो फ्रेम सिलेक्ट करो पूरा. सिलेक्ट द फ्रेम. पूरा ये। ऊपर ऊपर ऊपर. नहीं नहीं, वैसा नहीं. एस्केप करो. हाँ. वो जूम आउट करो. बहुत ही जूम इन है. पूरा अच्छा जूम आउट करो. हाँ, बस बस ठीक है. वो डेस्कटॉप नाम लिखा है ना, उस पे क्लिक करो. ऊपर फ्रेम पे. यहाँ पे। यस. सो ओके दिस इज व्हाट यू कैन सिलेक्ट. दिस इज द फ्रेम. इसको यहाँ प्ले करो. अभी आपको राइट साइड कॉर्नर में प्ले बटन दिख रहा है छोटा, प्रॉपर्टीज पैनल में. नहीं नहीं, वहां पे नहीं. वो नहीं एकदम. ये लेफ्ट साइड हो गया, वो राइट है. शेयर के साइड में अच्छा अच्छा प्ले यहाँ बटन पे हाँ 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 को है। प्ले को करो. अच्छा ओके. ओके तो अभी आपको दिखेगा कि आपकी वेबसाइट जब एक्चुअल स्क्रीन में दिखेगी तो कैसे दिखेगी. कैसी दिखी तो ओके। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो. हम्म ठीक है. तो ऑलराइट. इट्स क्वाइट बिग द हैमबर्गर मेन्यू एंड ऑल, बट ठीक है, चलेगा. अभी थोड़ा शिफ्ट हो रहा है ना, तो इसको आप वो हाँ हवर करो. आप ऊपर, थोड़ा सा ऊपर हवर करो. मतलब वो ये आ रहा था ना कॉर्नर में, सेटिंग्स आ रहे थे ना, उधर ही उधर ही. हाँ. सही इधर ही। हाँ, वो देखो शेयर प्रो. हाँ, वो सेटिंग्स तो वहां पे एडजस्ट करो. फिल स्क्रीन या फिर हाँ, फिल स्क्रीन कर दो.
नहीं नहीं नहीं, सॉरी, फिक्स स्क्रीन था शायद फिर वो। फिट हाइट एंड विड्थ, फिट हाँ, विड्थ एंड यस हाइट। यस। हो रहा है कुछ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिट विड्थ कर दो फिर, हर एक ट्राई करके देखो। हाँ, ओके, ग्रेट। सो नाउ यू कैन सी हाउ दिस इज लुकिंग। फॉन्ट्स बड़ा करना है, छोटा करना है, कौन से फॉन्ट के साथ जाना है, कौन सा अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो पूरा। देख सकते हैं यार। आई थिंक इसमें अभी क्या लग रहा है आपको, मतलब क्या इसमें ठीक होना चाहिए ये? अभी तो डिजाइन अच्छी है, थोड़ा सा स्पेसिंग में मैं बोलूंगी, मतलब थोड़ा सा स्पेसिंग आप कर सकते हो अच्छा। ओके। एंड ओके, आइकन्स वगैरह भी ठीक है। आइकन्स की साइज बहुत बड़ी है क्या? कितनी रखी है? मेरे को लग रहा है कि हाँ शायद बड़ी हम्म। बड़ी लग रही है बहुत ज्यादा, मतलब अब इसमें लग रही है एडिटर आई में जाओ, थिंक। एडिटर में जाओ और देखो, आइकन सिलेक्ट करो, एरो, 2 2 3 into 2 होना एरो चाहिए। एरो, एरो सिलेक्ट करो। ये हाँ, सो फोर 3 into 77 पिक्सल। इट्स एक्चुअली वेरी बिग। ओके, तो ये इसका आपने बेसिक। आइकन या इमेज लिया है? सॉरी। आपने आइकन लिया है या इमेज लिया है? क्या डाला है वहां पे? आइकन ही डाला है नहीं ना? नहीं, आइकन ही है, आइकन ही। ठीक है ठीक है, एडिटेबल आइकन। ओके, ठीक है। नहीं, ये टेक्स्ट क्यों लग रहा है? ये आइकन नहीं है, ये टेक्स्ट है। हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करो, वो तीन डैशेस जो है, वो बर्गर आइकन, ऊपर ऊपर कॉर्नर में, यहाँ पे। उस चीरा के पास अपने जो आइकन डाला है ना आपके डिजाइन हाँ। पर, उसको सिलेक्ट करो और डिजाइन एडजस्ट करो। हाँ, सी, नाउ सी, what you have done is you have created lines. Why? You have to use plugin for this, no? ओके। तो प्लगइन डाउनलोड किया है क्या आपने? नहीं, अभी नहीं करा, अभी तो तो जस्ट। आप जाओ नीचे रिसोर्सेस में, टूल बॉक्स दिख रहा है आपको नीचे, डिजाइन में नीचे। यहाँ पे। हाँ, हाँ, तो वहां पे आप उसके साइड में एक्शंस में जाओ, साइड में, लेफ्ट में, लेफ्ट लेफ्ट, नहीं वहां पे नहीं, वहां पे नहीं, बैक टू डिजाइन मोड। तो हाँ, वो जो आपने प्रेस किया था ना, उसके लेफ्ट में एक एक्शन का आइकन है, वहां पे जाओ, हाँ, एक्शन का ये रहा। जाओ वहां पे, प्लगइन्स एंड विजेट्स में जाओ, ऊपर ही है अच्छा प्लगइन। ये। हाँ। सर्च फॉर आइकॉनिफाई, सर्च करो डायरेक्ट आइकॉनिफाई, और पूरा नहीं नहीं, वो नहीं, हाँ, आइकॉनिफाई टाइप करो पूरा, आइकॉनिक फाइल। NI आइकॉनिक फाइल। FY, ओके। NIFY। आइकॉनिक फाइल, ओके। हाँ, रन इट, क्लिक दिस ऑन। वन। हाँ, एंड नीचे रन बटन आ रहा है, तो रन पे करो। ओके, यहाँ पे सर्च करो अभी, एरो चाहिए, होम होम आइकन चाहिए, बर्गर आइकन चाहिए, जो भी आइकन चाहिए आपको वो यहाँ ओके। से देना। ओके, तो ये नहीं ये नहीं, आइकन हम यहाँ से ले सकते हैं सारे के सारे, हाँ, हाँ। डायरेक्टली सर्च करो, ऊपर सर्च बॉक्स था। हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करो अभी, वो बर्गर आइकन है आपने जो लिया है ना, तीन डैशेस डाली है ना, हाँ हाँ, वो उसे सर्च बर्गर करो। आइकन बोलते हैं। हाँ, हाँ, सर्च करो बर्गर आइकन, यस, बस बर्गर टाइप करो, आइकन मत टाइप करो। हाँ, या, सो यू टेक दैट ओके, डैश, ठीक है। you drag and drop it, and अच्छा, then you, ड्रैग एंड ड्रॉप। yes, drag and drop. Ma'am, for images, what we have plugins to get images. Unsplash, use Unsplash, And one more, and photos by अनस्प्लैश। free pick। yeah, photos prefix, yeah. उसको ना बाहर निकालो, क्योंकि वो ब्लैक कलर में आपको नहीं दिखेगा। हाँ,
सिलेक्ट इट। अभी सिलेक्ट अभी हो नहीं रहा है ना, तो आप लेयर्स में सिलेक्ट करो उसको, लेयर पैनल में जाओ। लेयर्स में। हाँ, लेयर्स में देखो स्टैश, बर्गर, क्लासिक, हाँ लाइटली। हाँ हाँ, ठीक है तो ठीक है। अभी वो सिलेक्ट हो गया है। अभी हाँ प्रॉपर्टीज पैनल में जाओ, यहाँ पे राइट साइड में नीचे स्क्रॉल करो। नहीं नहीं नहीं, वो सिलेक्शन चला गया, आपने क्लिक किया, फिर से सिलेक्ट करो। ये अभी सिलेक्ट हो गया। प्रॉपर्टीज पैनल में नीचे जाओ। अब फिल कलर में जाने के। नहीं, और नीचे जाओ, और नीचे जाओ। हाँ, ओके यहाँ पे सिलेक्शन कलर को वाइट कर दो। यस, अभी दिखेगा वो आइकन। राइट, पूरा वाइट कर दो। हाँ, राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, बंद करो उसको। और उसका साइज बढ़ाना होगा तो 24x24 है अभी, उसको नहीं, वैसे नहीं करने का, वैसे नहीं करने का। ठीक है ठीक है। कंट्रोल Z करो, कंट्रोल Z। हाँ, तो उसको सिलेक्ट करो, और हम्म। प्रॉपर्टीज पैनल में देखो 24x24 है, तो उसको बढ़ाओ अभी। 32x32 करो, या फिर 44x44 करो। वो ऑटोमेटिक, वहां पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके। ठीक है, 44x42, ठीक है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइज आप यूज करो। यस। तो अभी एरोस का भी सेम करना है। ओके यहाँ पे आइकॉनिफाई प्लगइन बंद करके रखो तो भी चलेगा। प्लगइन यूज होने के बाद एरोज सर्च करो, बहुत सारे एरोज मिलेंगे, उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, उनको यूज करो। ओके। यस, so that's why I'm saying कि send me the design file, you will get to know about what all mistakes you're doing। ठीक है ठीक ठीक है। है, चलेगा। ओके, ये फोटो भी आपने जो यूज किया था वो कहाँ से लिया? फोटो मैंने शायद ये एक फ्री साइट से लिया था, ऐसे अनस्प्लैश वगैरह या फ्री से। हाँ, तो अनस्प्लैश का भी प्लगइन सर्च करो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसी में ही सारा कुछ हो हाँ, जाएगा ना। उसी में अनस्प्लैश आएगा, उसी में फ्री पिक प्लगइन मिलेगा, सब मिलेगा वहीं पे। तो ओके। आपको गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, और ठीक डाउनलोड है। करने की जरूरत नहीं है। तो ये कोई सा भी अगर कोई भी फोटो फोटो भी अगर हम लोग सर्च करते हैं तो फोटो भी सेम ये इसी तरीके से अगर रन करना पड़ेगा। हाँ, रन करना। रन करने बाद जो भी फोटो चाहिए वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे, देन आ ड्रैग एंड ड्रॉप कर जाएगा। दो। यस यस। ओके ठीक है आप प्रैक्टिस करो, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, ऑलराइट गाइस, I'll stop the recording.